Dear students, good morning to all of you. Myself Rakesh Singh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College Kathua, Union Territory of Jammu and Kashmir. I will be discussing with you all about peptides and proteins, which is in your syllabus. In this video lecture, I will explain to you about primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of protein. An overview of primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of protein. Let us discuss one by one. First, primary structure. Before going into the detail of primary structure of protein, I will explain to you what are proteins. Chemically, what are proteins? Chemically, they are polymers of alpha amino acids. What are alpha amino acids? In which amino group is alpha with respect to carboxylic group. Amino group is alpha with respect to carboxylic. These are alpha amino acids. There are about 20 naturally occurring amino acids, alpha amino acids, which constitute protein. The simplest of all alpha amino acids is glycine. This is glycine. Except glycine, all alpha amino acids are optically active and belong to L series. You have learned about DL configuration of nomenclature, relative system of configuration. So they belong to L series. As carbohydrate belong to D series, all naturally occurring amino acids belong to L series. This you have to keep in mind. Now, how the proteins are formed? They are condensation products of alpha amino acids. When amino group of one alpha amino acids reacts with the carboxyl group of the other alpha amino acids with the loss of water. And the amino acid residues are held together through peptide bonds. Peptide bonds. This is the side chain R. Depending upon the type of side chain R, we have different type of alpha amino acids. So let us now concentrate on primary structure. What is meant by primary structure? It refers to the sequence in which various amino acids present in a polypeptide chain or protein are linked to each other. The sequence of various amino acids in a protein gives us the primary structure. For example, hormone insulin, which is very important for our body, has two polypeptide chains designated as A and B. Each chain has its own set of amino acid sequence. Chain A has a different amino acid sequence. Chain B has a different amino acid sequence. For example, chain A starts with glycine at the N terminal and ends with asparagine at the C terminal. And it is different from the sequence of the B chain. For example, you see it in diagram. Chain A, the number of amino acids are also different. The chain A starts with glycine at the N terminus and ends with asparagine at the C terminus, C terminal amino acid. Whereas the second chain starts with phenylalanine and ends with alanine. In addition to, the two chains are held together by disulfide bridges. These are disulfide bridges. There are other interactive forces also which hold together these two chains. Hydrogen bond, which are not shown here. Van der Waals attractions, dipole attractions. Hydrogen bond किसके बीच में बनेगा? Carbonyl of one, NH of the other chains. So this is the primary structure sequence. This sequence is very important. For example, at this position you have leucine. So if you replace this with another amino acid, the property of insulin will be lost. जो इसकी property है वो खत्म हो जाएगी. This is very important. So primary structure of the protein is very, very important. That is the sequence. Importance of primary structure. It must be noted that
The sequence of amino acids is very important because change of just one amino acids in protein sequence can affect the protein's overall structure and biological functions. For example, change of just one amino acid in polypeptide sequence of hemoglobin causes a disease called sickle cell anemia. Hemoglobin has 4 polypeptide chains. 2 are beta and 2 are alpha. In beta chains, the 6th amino acid is glutamic acid. The replacement of this glutamic acid with valine makes the hemoglobin non-functional in terms of its oxygen carrying capability, and thus the person develops a disease which is called as sickle cell anemia. There are about 600 amino acids in the hemoglobin. 4 chains together have 600 amino acids, and the chain of just 2 amino acids, one in one beta chain, other in other beta chain, glutamic acid with valine, changes the property of hemoglobin. It loses its capability to carry oxygen and causes a disease which is called as sickle cell anemia. तो इस बात से आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का बच्चे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. दिस वाज अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर. एक मैंने आपको दिखा भी दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट वाज ऑफ इंसुलिन. अब वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कन्फर्मेशन which a polypeptide chain assumes due to hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कन्फर्मेशन प्रोटीन का मॉलिक्यूल एक्वायर करता, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द साइड चेन आर. मैं पहले ही बताया आपको, दिस आर डिपेंडिंग अपॉन द साइड चेन आर वी हैव टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, alpha helix and beta pleated sheet. Alpha helix was structure proposed by Linus Pauling in 1951. If size of R group is quite large, then a protein possesses alpha helix structure at secondary level. Alpha helix structure arises due to intramolecular hydrogen bonding. Intra मतलब within the same molecule, same chain के अंदर hydrogen bonding. Hydrogen bonding किसके बीच में होगी? A carbonyl group of one amino acid residue to the NH of the 4th amino acid residue. अब within the chain चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, carbonyl of one with the 4th carbonyl of one amino acid residue with the 4th amino acid residue NH. इसकी वजह से the chain coils around itself to do this hydrogen bonding. Chain coils around itself and gives a spiral structure. This is the conformation जिसकी हम बात कर रहे थे, and acquires spiral structure which is called as helical structure that resembles a curled ribbon with each turn of helix containing 3.6 amino acid. एक helix में, एक turn में कितने amino acid होंगे बच्चे? 3.6. The R groups of amino acid point outward from the alpha helix. R groups हैं, इनकी बात कर रहा, ये बाहर की तरफ point करेंगे. Here they are free to interact with the outside environment. और सॉल्वेंट वाटर में डालते, वाटर से इंटरेक्ट कर सकते. या दो चेन्स हैं आपस में, उनका इंटरेक्शन आपस में हो सकता. बट विद इन द चेन, चेन के अंदर जो है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से द चेन हैज coiled around itself in the form of helix. So both type of helix are possible, right-handed as well as left-handed, right-handed as well as left-handed, दोनों पॉसिबल हैं. लेकिन और मोटिफ ने, However, Motif in 1956 theoretically प्रूव किया है कि L amino acids, मैंने पहले ही आपको बताया कि all amino acids belong to L series, naturally occurring. He has proved it theoretically that for L amino acids, right-handed helix is more stable. Hence, protein always possess right-handed helical structure. His protein chain turns clockwise to form alpha.
Let me show you. This is right-handed helix, right-handed helix, right-handed helix, and this is left hand. अब टर्न किया तो उसका जो बता रहा था मैं कि एक का कार्बोनाइल NH से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अदरवाइज अगर सीधा रहे चेन तो फिर पॉसिबल नहीं है, कैसे बनाएगा? दैट इज व्हाई इट कॉइल्स अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्वायर करनी, जितनी इंटरेक्शंस ज्यादा होंगी विद इन द मॉलिक्यूल, उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। दिस पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। नाउ next is beta pleated sheet structure. If size of R group is small or of moderate size, then beta pleated sheet structure is obtained. Beta pleated sheet structure कैसे obtain होता? In a beta pleated sheet structure, two or more segments of polypeptide chain line up side by side. They line up side by side, forming a sheet-like structure held together by hydrogen bonds between carbonyl group of one chain and amino group of the other chain. में क्या देखा आपने बच्चे? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले बनती, इंट्रा, इसमें इंटर, बिटवीन द चेन. The strands of the beta pleated sheet may be parallel pointing in the same direction. Parallel pointing same direction मतलब एक का n टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, दूसरे का भी n टर्मिनल से. They are parallel now. एक चेन, ये चेन है एक बच्चे, इधर n टर्मिनल है, दूसरी चेन में क्या है बच्चे? C टर्मिनल. The polypeptide chain has two ends. The end having NH2 group, free NH2 group, is called N terminal, and the end having free COH group is called C terminal. अगर इधर NH2 है फ्री तो इधर क्या होगा? COH. इसको बोलेंगे C terminal. वो ये कह रहा है कि the two chains, the two strands of beta pleated sheet may be parallel. Parallel का मतलब ये, or anti-parallel, pointing in opposite direction, meaning that n terminus of one strand is positioned next to the C terminus of the other. एक का n, दूसरे का क्या होगा? सामने C. Many proteins contain both alpha helix and beta pleated sheet, though some contain just one type of secondary structure. याद रखिए बच्चे, कुछ प्रोटीन में आपको दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे, अल्फा एक हिस्से में अल्फा होगा, एक हिस्से में बीटा, और some may have only one. डायग्रामेटिकली इसको हम दिखा देते हैं आपको. लेट अस शो यू डायग्रामेटिकली. These are the two structures. एक ही प्रोटीन का मॉलिक्यूल दिखाया गया है. एक में देखिए प्रोटीन चेन्स आर लाइंग साइड बाय साइड, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, बॉन्डिंग जिसकी बात कर रहे, सो दिस इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट. और ये देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें जो है चेन कायल अराउंड इटसेल्फ. यहां से देखें आप इसको, जैसे हमने कहा ना ऐसे, राइट हैंडेड हेलिक्स, यहां से शुरू करें आप इसको, है ना ऐसे, अल्फा हेलिक्स. Carbonyl of one combined with NH of the other amino acid, और वो भी कौन सा बताया उसने? चेन में ऐसे चलेगा ना, ये ऐसे, यहां से होके ऐसे, तो ये फर्स्ट, ये carbonyl group of one amino acid residue form hydrogen bond with fourth amino acid, fourth NH group of the fourth amino acid residue within the same chain. Carbonyl group of one amino acid residue form hydrogen bond with NH group of the fourth amino acid residue within the same chain. So we get alpha helix structure. This is beta pleated sheet. ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. आप इसको छोड़ दें, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. आप इसको दें, चेन्स को ड्रा कर लें. क्या तरीका होता है? CONS, NSCO, CHR, NSCO, CHR, यही रिपीट करना होता है. उसने कहा दे में भी पैरेलल, दे में भी एंटी पैरेलल, है ना, वो आप उसको देख सकते. CONH, CHR, CONH, CHR, NH के सामने आपने कार्बोनाइल दिखाना. CO ऊपर है तो NH नीचे होगा, नेक्स्ट में CO नीचे होगा, NH ऊपर होगा. सेम चीज ऊपर रिपीट होगी तो ऑटोमेटिकली CO के सामने क्या आएगा बच्चे? NH. तो द टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट?
bonds, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। So this is beta pleated sheet structure. This is alpha helical structure, and these two conformations which a protein molecule acquires due to hydrogen bonding, that is called as secondary. What is secondary structure? The conformation which protein molecule acquires due to hydrogen bonding, that is called as secondary structure. We have two types of secondary structures, alpha helix and beta pleated. Now third is tertiary structure. Overall three-dimensional structure of polypeptide is called as tertiary structure. Overall उसने shape कौन सी ली? At normal pH and temperature, each protein molecule acquires tertiary structure which is most stable. At a given pH, हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की कोशिश होती है कि वो स्ट्रक्चर वो अटेन करे जो ज्यादा स्टेबल। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रस, एक ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? विच हैव ऑलमोस्ट सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर लेंथ। फाइब्रस प्रोटीन की एक खासियत होती है कि दे हैव द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर लेंथ। ये possess rod like or rope like as its tertiary structure। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस प्रोटीन का, वो रॉड लाइक या रोप लाइक होता है। दे हैव सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर लेंथ। अगर अल्फा हेलिक्स होगा तो पूरी लेंथ में क्या होगा बच्चे? अल्फा हेलिक्स। और अगर बीटा प्लीटेड शीट होगा तो पूरी लेंथ में क्या होगा? बीटा प्लीटेड शीट, जिसकी वजह से वो रोप लाइक स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो आपको कोई पूछे कि फाइब्रस प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज रॉड लाइक और रोप लाइक। फॉर एग्जांपल अल्फा कैरोटीन, द मेजर प्रोटीन ऑफ हेयर, हमारे बालों, इसकी एक लाइव एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स don't have same secondary structure throughout their length. Some parts may have alpha helix structure, some other have beta pleated sheet। कुछ हिस्से में देखिए बच्चे अल्फा आ गया, मैं इधर ही ड्रा कर दूंगा, कुछ हिस्से में अल्फा आ गया, कुछ हिस्से में फिर क्या आ गया? बीटा प्लीटेड शीट, सीधी चेन। अब साइड बाय साइड अगर ये चेन्स आए साइड बाय साइड, बच्चे देखें साइड बाय साइड आए तो फिर अट्रैक्शंस, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल है उसको इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर दोनों चेन एक जैसी हैं, हर जगह डिस्टेंस बराबर है, दोनों चेन एक जैसी हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट, डिस्टेंस बराबर है, तो दे एक्वायर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कुछ हिस्से में अल्फा हेलिक्स है, कुछ हिस्से में क्या है? बीटा प्लीटेड शीट, तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बीच में इसकी वजह से काइल की वजह से ज्यादा नजदीक नहीं आ पाए, तो कहीं डिस्टेंस ज्यादा कहीं कम, जिसकी वजह से रॉड लाइक शेप एक्वायर करे तो इनको ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती। एंड व्हाट दे डू, फिर ये क्या करते हैं बच्चे? On the other hand, globular protein do not have the same secondary structure throughout their length. Some parts may have alpha helix, some other may have beta pleated sheet, whereas some other parts may have random coils. In such cases, the entire protein molecule may fold up, giving spherical shape to the protein. Globular protein spherical shape acquire करते, तभी उनको globular बोला गया। So tertiary structure of globular protein is spherical. So what is tertiary structure? The overall three-dimensional structure of polypeptide is called as tertiary structure. और याद रखें, at normal pH and temperature, each protein molecule acquires tertiary structure which is most stable. अगर फाइब्रस प्रोटीन है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर रॉड लाइक है, रीजन बता दिया मैंने क्यों है, बिकॉज फाइब्रस प्रोटीन possess same secondary structure throughout their length, due to which they acquire a rod like structure, whereas globular protein has a spherical tertiary structure. Why? Because they have different type of structures at different points in the polypeptide chain. Some parts has what? Helix structure. Some parts have beta, some has random coils. So as to acquire stability, what happens? The entire protein molecule fold up to give a spherical shape to the protein. Therefore, globular protein possess spherical structure. Tertiary structure is primarily due to various interactions like hydrogen bonding, ionic bonding, dipole-dipole attractions, London dispersion forces, van der Waals जिसको हम कहते हैं, due to which protein molecule acquires a particular three-dimensional shape. Protein molecule वो three-dimensional shape acquire करेगा बच्चे, rod-like या spherical जिसकी बात कर रहे, जिसमें उसको ज्यादा stability। If the protein has same secondary structure throughout, it acquire rod-like, उसमें उसको ज्यादा stability मिल रही है। If the protein has different
secondary structure at different lengths, then it require globular. Also important to tertiary structure are hydrophobic interactions between non-polar hydrophobic. In addition, the disulfide bond, that is covalent linkages between the sulfur-containing side chains of cysteines, are much stronger than the other type of bonds that contribute to tertiary structure. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, लंडन फोर्सेस. इन एडिशन दिस डाइसल्फाइड ब्रिजेस की बात कर रहा है वो, जैसे आपने किसमें देखा, इंसुलिन में सल्फर सल्फर बॉन्ड बन रहा है. दे एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर सेफ्टी पिन्स, मतलब चेन्स को होल्ड अप करके रखती है, बिकॉज बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये चेन्स को डिस्प्लेस नहीं होने देगा. So they act like safety pins, keeping parts of polypeptide chain firmly attached to one another. So disulfide bridges हैं, they will hold the parts of the polypeptide chain and hold them together. ये था बच्चे tertiary structure. Grammatically भी दिखाया हुआ है, देखिए. This is tertiary structure. These are the different type of interactions which have been shown. Ionic bond, polar groups के बीच में, hydrogen bond, disulfide bridges, hydrophobic interactions, non-polar groups के बीच में जो interactions. These are the different type of interactions that contribute towards tertiary. Type of interactions have been shown here which contribute towards tertiary. Now let us have quaternary structure. Quaternary structure. Many proteins are made up of single polypeptide chain and have only 3 levels of structure, that is primary, secondary and tertiary. ज्यादातर प्रोटीन में क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा क्या होती हैं बच्चे, पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे हीमोग्लोबिन. However, some proteins are made up of multiple polypeptide chains, also known as subunits. When these subunits come together, they give the protein its quaternary structure. For example, hemoglobin, which carries oxygen in the blood and is made up of 4 polypeptide chains or subunits. 2 are alpha, 141 amino acid units each, and 2 are beta, 146 amino acid residues each. Another example is DNA polymerase. An enzyme that synthesizes new strands of DNA is composed of 10 subunits. In general, same type of interactions that contribute to tertiary structure, mostly weak interactions such as hydrogen bonding, London dispersion forces, also hold the subunits together to give quaternary structure. अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे हीमोग्लोबिन में है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में है, उस केस में वो जो चेन्स हैं उनको होल्ड अप कौन करेगा टुगेदर, वही फोर्सेस जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होल्ड अप करती हैं चेन को, so as to give it stability. So these forces hold the subunit together and give quaternary structure to the protein. Quaternary structure of protein refers to determination of number of subunits, कितने सब यूनिट है उसमें, एंड देयर ओवरऑल अरेंजमेंट इन एग्रीगेट प्रोटीन मॉलिक्यूल. एज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल में एज ए होल उन सब यूनिट का अरेंजमेंट क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स लाई एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर कैटन. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहां राइज होता है, देयर द प्रोटीन हैज more than one polypeptide chain, like hemoglobin, like DNA polymerase. ये बच्चे देखिए 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपके जनरल नॉलेज के लिए. इमेज क्रेडिट ओपन स्टैक्स बायोलॉजी. प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, प्लीटेड शीट देखिए, चेन्स आर लाइन साइड बाय साइड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये देखिए बच्चे ये क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. उसके बाद आ गया टर्शियरी, दैट इज प्रोटीन हैज काइल्ड अराउंड इटसेल्फ, काइल्ड अराउंड टू गिव 3-dimensional structure. Protein molecule is folding into 3-dimensional structure. अब डिपेंड करता है कि अगर आपका जो प्रोटीन है वो फाइब्रस है तो उसमें रॉड लाइक होगा, और अगर ग्लोबुलर है तो उसमें स्फेरिकल होगा. और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप देखिए बच्चे
इसमें 2 चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई गई हैं एक ही प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, उनका आपस में अरेंजमेंट, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, quaternary structure. Now we have discussed here primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. An overview. I have given you an overview of primary, secondary, tertiary, and quaternary structure of protein. If you have any doubt regarding this video lecture, you may WhatsApp me. This is my WhatsApp number 94691638848. I have tried my best to explain to you about uh, different levels of structure of the other videos. We will discuss the other topics related to and routines which are in your syllabus. Thank you. Thank you, students. Thank you very much.